Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad School's Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 6 English, unit number 17, and this is fourth lecture from unit 17. In this lecture, we are going to learn about parts of speech. You already have learned a lot of parts of speech. In this lecture, we will do some exercises for parts of speech. Then we will move towards word study, and then we will learn about writing a story. Okay, before we begin this lecture, just make sure that you have your English student's book, your classwork notebook, and your complete stationery with you. You know that you should have your blue ink pen, blue marker, and pencil, eraser, and sharpener. If you need to write down anything in your English classwork notebook, you will write it down with your pen and marker, but when you need to write anything on your book or workbook, you will write down it with lead pencil. Okay, on page 122 from student's book, please come to page 122 and open it. Here we are going to do the exercises from parts of speech. Interjection. Do you know what is an interjection? Interjection वो words होते हैं जो expressions को show करते हैं. An interjection is a short word or phrase usually used to show emotions or expressions. For example, yo cried Midas. The gold spell is gone. जो भी कोई ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई एक्सप्रेशन या कोई इमोशन जाहिर किया हो, वो उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? यो इज़ एन इंटरजेक्शन. इट शोज़ द किंग इज़ डिलाइटेड, हैप्पीनेस. उसके अलावा आप हैप्पी जब होते हैं तो किस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं? हुर्रे, याहू. या जब आप कोई सैड बात बता रहे होते हैं या सैड बात सुनते हैं तो आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं? आप क्या वर्ड यूज़ करते हैं? ओ, ouch, alas, etc. So these type of words are called interjections. Interjections are followed by comma or exclamation mark. या आप इनके बाद comma ऐड करते हैं या फिर exclamation mark. Words that are used as fillers are also interjections. For example, well, let me tell you what happened to the king. Here word well is also an interjection. उसके अलावा आप sometimes अपने sentence का start ऐसे करते हैं. Now let's see what happens. Here now is again an interjection. Okay. On page 122 we have an exercise which is copy the sentences and underline the interjection. You just need to underline the interjection words in your book. So let's begin. The first sentence is, now let's see what we can do about this problem. Here in this sentence, now is an interjection. Next is, oh, I understand what you want. Here, oh is interjection. You need to underline these interjections. Third is, ouch, that hurt. Ouch is an interjection. Hey, don't touch the dog. Hey, here, hey is interjection. Hooray, I'm back to normal. Hooray is an interjection. Watch out, there's a lampshade behind you. Watch out is an interjection. Have you underlined all the interjections? That's good. On page 122 from your student's book, the second exercise is, think of a suitable interjection to fill the gaps in these sentences. Okay, here some sentences are given and you need to fill the blanks with suitable interjections. अगर कोई sentence sad वाला होगा तो आप उसके start पे ओह ऐड करेंगे. अगर कोई वो हर्ट वाला होगा तो आप आउच ऐड करेंगे. अगर कोई खुशी वाला होगा तो आप हुर्रे. अगर कोई किसी को कॉल आउट करने वाला होगा तो आप हे से ब्लैंक्स को फिल करेंगे. सो लेट्स बिगिन. दिस एक्सरसाइज ऑल्सो टू बी डन ऑन योर बुक. फर्स्ट सेंटेंस इज, कैन यू आई कैन विश फॉर एनीथिंग आई वॉन्ट. एंड हेयर आई एडेड यो. You can add another interjection like hooray, etc. I added here yo. I can wish for anything I want. Second is,
यू हैव टर्न्ड द बेबी टू गोल्ड, यू हैव टर्न द बेबी टू गोल्ड, ये कोई खुशी की बात तो नहीं है ना, ये तो सैडनेस वाली बात है कि बेबी किसी का अगर गोल्ड का हो जाए। सो हम सैड वो सेंटेंसेस के साथ क्या ऐड करेंगे? ओ ओ ओ यू हैव टर्न्ड द बेबी इनटू गोल्ड। थर्ड इज आई एम श्योर वी कैन सॉर्ट दिस आउट। अब ये किसी को कोई स्टेटमेंट बताई जा रही है कि आई एम श्योर वी कैन सॉर्ट दिस आउट। आई एडेड हियर हे, hey I'm sure we can sort this out. Fourth one is that golden book dropped on my toe. अब कोई चीज़ अगर गोल्ड की बुक आपके पाँव पे गिर जाए तो क्या होता है? आउच, चोट लगती है, हर्ट होता है। तो हर्ट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? आउच, आउच, दैट गोल्डन बुक ड्रॉप्ड ऑन माई टो। फिफ्थ इज डोंट कम नियर मी, ये एक तरह का कॉल आउट है ना, तो हम क्या इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे? हे, हे डोंट कम नियर मी। सिक्स्थ इज आई मेड अ टेरिबल मिस्टेक। मिस्टेक पे आप हैप्पी होते हैं या क्या होता है? सैड होते हैं। सो हम ऐड करेंगे ओह, ओह आई मेड अ टेरिबल मिस्टेक। These both exercises were to be filled on your book. Have you done? Okay, make sure to write down anything on your book with your lead pencil. Okay. On book page number 123, we have the exercise for word study, and the topic is words with more than one meaning. Same spellings, सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स। और हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे क्या मीनिंग्स रखता है? वो हमें उस सेंटेंस से पता चलता है। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग्स, यू कैन वर्क आउट विच मीनिंग इज इंटेंडेड बाय रीडिंग द होल सेंटेंस। जैसे एक वर्ड है लेफ्ट, लेफ्ट साइड भी होती है और लेफ्ट हम लीव की थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट होती है, तो दोनों के स्पेलिंग्स भी सेम है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वाला लेफ्ट है? तो वो हमें उसके सेंटेंस से पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, वट एवर आई होल्ड और टैकल और टैप टर्न्स इनटू ब्रिंग गोल्ड। हियर टैप हिट मीन्स किसी चीज़ को टच करना, हिट जेंटली, टच जेंटली। शी टर्न्ड ऑन द टैप टू वॉश हर हैंड्स। यहाँ पे टैप का क्या मतलब है? यहाँ पे वो टैप है जो आप वाटर के लिए यूज़ करते हैं, नल जो होता है हमारे वॉशरूम्स या वॉश बेसिन में, ये वो वाला टैप है। अब स्पेलिंग सेम थे, प्रोनाउंसिएशन सेम थी, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे टैप का क्या मीनिंग है। इज इट क्लियर? यस, दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर हेयर फॉर आर एक्सरसाइज ऑन पेज 123, एंड एक्सरसाइज 1 इज टॉक विद अ पार्टनर अबाउट व्हाट दीज वर्ड्स मीन इन द स्टोरी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और आपने बताना है कि यहाँ पे इन वर्ड्स की क्या मीनिंग है। दिस एक्सरसाइज विल टू बी डन ऑन योर classwork notebook. Open your English classwork notebook and prepare classwork page, and don't forget to write down the index. Okay, here left जो इस स्टोरी में वर्ड आया है लेफ्ट, वो साइड वाला लेफ्ट है या जो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है? इट मीन्स वो लीव की थर्ड फॉर्म मीन्स मिसिंग। लेफ्ट मीन्स मिसिंग। बो, बो का यहाँ क्या मतलब है? बो का मतलब है बैंड। स्पेल, स्पेल का मतलब स्पेलिंग्स, जो इंग्लिश के स्पेलिंग्स होते हैं वो। नो, इट मीन्स मैजिक। रेस्ट, जो हम आराम करते हैं वो वाला रेस्ट या रिमेनिंग वाला रेस्ट? इस लेसन में जो वर्ड यूज़ हुआ है रेस्ट, उसका मीनिंग है रिमेनिंग वाला रेस्ट, जो बाकी बच गया। हैव यू रिटन दिस सॉल्यूशन इन योर क्लास वर्क नोटबुक? That's good. On book page 123, here in this lesson we have a writing portion for cinquain poem. Do you know what is a cinquain poem? Let me tell you. Cinquain is just 5 lines long poem with only a few words on each line. 5 lines की poem होती है और हर line पे some words होते हैं, और ये जो number of words है in each line ये defined नहीं है. Cinquain does not need to rhyme,
बट यू कैन इंक्लूड राइम्स इफ़ यू वांट, लेकिन सिंकेन पोएम की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसमें कोई भी वर्ड्स राइमिंग हो. इफ़ यू कैन देन दैट्स फाइन. द बेस्ट सिंकेन्स टेल अ स्टोरी. और अगर सिंकेन में स्टोरी कंप्लीट नहीं भी बताई जा रही तो देन दैट्स ऑल्सो फाइन. बट जो कन्वेंशनल सिंकेन पोएम्स होती हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी होती है एक्चुअली. ऑन पेज 123 हियर अ सिंकेन पोएम इज़ गिवन फॉर यू विच इज़ माई रूम. इसका सबसे ऊपर वाली जो लाइन है वो टाइटल या टॉपिक लाइन होती है. उसमें क्या आएगा, टॉपिक, जो भी कोई आपका टॉपिक होगा आपकी पोएम का वो सबसे ऊपर वाली लाइन में आएगा. देन आप उसका जो भी कोई उसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं आप नेक्स्ट 4 लाइन्स लिखेंगे. माई रूम वॉज अपसाइड डाउन, टॉयज वर थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, मॉम enraged ordered to tidy up, so I complied. ओके, यहाँ पे एक पूरा सीन बताया है कि मेरा रूम बहुत अनटाइडी था, मॉम ने मुझे कहा और फिर मैंने उसे सेट कर लिया, सेटल डाउन कर लिया. तो इस टाइप की पोएम जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंकेन पोएम. नाउ व्हाट इज़ योर टुडेज होमवर्क? यू हैव टू राइट योर डायरी फर्स्ट. From students book page 123 you have to write down a सिंकेन poem in your homework notebook. और इस सिंकेन पोएम का टॉपिक कोई भी हो सकता है. आप उसका टॉपिक माई क्लासरूम लिख सकते हैं, आप उसका टॉपिक माई बुक रख सकते हैं, आप उसका टॉपिक द सन रख सकते हैं, टॉपिक हो सकता है मॉम, टॉपिक हो सकता है रेन. कोई भी टॉपिक आप पिक करें, उस पर 5 लाइन्स पोएम देखें, उसमें एक छोटा सा सीन डिस्क्राइब हुआ होगा और जो पोएम का सबसे ऊपर वाली लाइन होगी उसमें क्या होगा, टॉपिक नेम होगा. वेरी गुड. So you will do this exercise in your English homework notebook. Then from workbook you have to do page 69 on your English homework notebook. Good luck dear grade 6 students. Allah Hafiz.